गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी इन आर सिलेबस, यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स में फॉर लूप, कंडीशंस जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। मार्क फंक्शन, डेट फंक्शन, नंबर फंक्शन, ये सब हो गया हम लोगों का। सो अभी यूनिट 3 का लास्ट वाला पार्ट बचा है हम लोगों का, डॉक्यूमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है वो समझते हैं। So before we start with this part, that is Unit 3 का last वाला part, I want you to just have a look at this video, so आपको एक better understanding मिलेगा। Then हम लोग अपने topic पे जाते हैं। So I'll just share a video. Hi, I'm Bob Tabor with LearnVisualStudio.net. In this lesson, I hope आप लोगों को voice आ रहा है ना सबको? वीडियो का वॉइस क्लियर है एवरीवन स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके। सो जस्ट मेक श्योर आप ध्यान से देखो, बाद में मैं अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूँ। ओके। we're going to finally talk about the document object model, or rather, as it's known, the DOM. At a high level, the DOM is simply a hierarchical collection of software objects, each object representing a single HTML element or a single literal string on the web page. Now, one of the main reasons that the DOM exists is so that developers can programmatically modify the behavior of the web page using JavaScript. So let's suppose that you request an HTML web page from a website. The server returns the HTML page and your browser downloads the raw HTML into memory. But how does it take that raw HTML and then render it to screen and allow you to modify the behavior of the HTML using JavaScript? So I want to describe a series of steps, but in doing so, I realize that I'm oversimplifying what really goes on because honestly, I'm not privy to how these features are really implemented inside of web browsers. I'm going to be describing each step as kind of a linear process, but I am sure that modern web browsers will perform these steps in parallel, and that it's a lot more complicated than I'm making it out to sound, okay? But my bare bones explanation here should serve as the general series of steps required for a web browser to translate HTML into what you ultimately view on screen and what you ultimately are working with as a JavaScript developer in the DOM, okay? So the first step after the browser receives the raw HTML is to parse through it. The Parser Engine is that part of the browser that translates the HTML into a series of recognizable tokens. So, for example, it'll see some text and it'll say, ooh, that's an HTML element. They'll see some more text and it'll say, ooh, that looks like a literal string. They'll see some more text, oh, that's an HTML element, and it refers to this image, this video, this Flash movie, this external JavaScript file, this external cascading style sheet file. And so it may have to stop right there and start downloading some things, right? Perhaps because a number of different reasons. For example, with the cascading style sheets, it needs some of that information as it's constructing its DOM so that it can present things correctly when it gets to the part when it's actually rendering it to screen. So the parser's main job is to turn those recognizable tokens into a tree of related objects. The rendering engine will then use that tree of related objects to determine where it will position elements on screen. So you as a developer will then be able to use JavaScript to interact with this tree of related objects through a number of properties and methods that each object inherits at the point it was instantiated, all right? So most of this lesson will focus on exactly that, learning about the properties and the methods exposed by the DOM that you can reference inside of your JavaScript. So let me illustrate that with a little web page that you see on screen. So here we have a simple document with a header and a couple of paragraphs. I just want to call your attention to the header one that has some text in it, and then also to the paragraph that has an ID of second. It also contains a child element of strong, and then within it, it has some literal text second paragraph. So first of all, in this example, when the parser loads the HTML file and it locates that first H1 element, it'll create an object that represents that H1 element in its own memory. The browser then attaches that new H1 element as a child to its parent object, which in this case is the body element itself. And then it keeps doing this
until the browser has a complete representation of the page in memory in a tree-like structure. And that tree-like structure of related objects in the browser's memory is the document object model, the DOM. So again, I'm going to oversimplify this greatly and I'm going to leave some things out, but it's roughly turned into a hierarchy of objects that looks something like this, where you have some top-level objects, the window of the document, and then you see the H1 in a series of paragraphs below it. Notice that paragraph with an ID of second, it has a child called strong, and it has a child literal text with the words hello world inside of it, and I've left the rest of those sorts of things out of this diagram. But you'll notice first of all that the DOM has these top level objects like the window and the document. These are important. They expose a number of functions to access any given element in the DOM, so you can do things like get a reference to a given DOM element. We'll do that in just a minute. The window is important because it allows you to respond to an important event in the web page's lifecycle, and we'll talk about that in just a minute too. Okay, so at this point I have another example to take a look at. It's actually similar to the one we saw on screen, but it actually is working. You can see here is what it looks like in Internet Explorer. And then if we take a look at the c9js_13.html file in Notepad, you can see that inside of its body there's an H1 with the ID of title. Then it has a couple of divs. Here's a div and here's a div. And inside those divs it has 3 paragraphs. Notice that second paragraph still has a strong and some text in it. We'll probably get to that in a little bit. And then it also has an input type equals submit ID of click me. Remember that word click me, we'll be using that throughout the remainder of this video. And then it also has this hyperlink, and we'll use this, and it has an ID of my anchor. So we'll get to that a little bit later as well as we start programmatically touching some of these HTML elements. All right. So suppose that, first of all, we want to attach an event handler to the click event of this button, this submit button with an ID of click me. How would we go about doing that? Well, let's take a look at the script 13.js. You should be able to locate it with the rest of the content that you were able to download for this video. And notice that it has, we have a function in it already called function run the example, and it's simply going to open up an alert box. We'll add some more code in this as time goes on. But the first thing I want to do is try to attach this function and have it fire off every time the input button is clicked. So how can we go about doing that? Well, what we can try the first time around is to get a reference programmatically to that input button, and then we'll attach this event to its on-click event property. So let's start here, click me button. So I've got a variable called click me button, and I'm going to use the document.getElementById. So it's that document object. Again, this gives us access, programmatic access to the rest of the DOM. And we'll use this getElementById method to retrieve a single element in the DOM using its ID, in this case, click me. All right. Now that we have a reference to that input button, then I'm going to use click me button dot on click. So whenever the button is clicked, we're going to execute run the example, which is this code right here. All right. So let's try this. Going to refresh my browser, but as you can see, absolutely nothing happens. And the reason nothing happens is because there's a timing issue, or rather there's an issue with the order in which the events are occurring on the web page. I'm going to have a lot more to say about this at the very end of this video, but in a nutshell, at the point when this code is executed, the DOM element called click me has not yet been created. So the code is ignored, and since this code is ignored, obviously this code is ignored, and we never get it to execute whenever you click the click me button on the web page. All right, so what we need to do is slow this down a little bit, wait for the click me button to be created as a DOM element, then we can execute this code. And then, because we executed that code and we attached the run the example to the onClick event, whenever we click the button, it'll actually happen. And so one option that we have is to use a event called window.onload.
And the window.onload event is raised once the entire web page has been loaded, not just once the DOM has been finished being constructed, but also once all images and videos and flash files and what have you that web page is referencing, after all of that has been successfully downloaded, there's nothing else to download, then the window.onload event will fire. All right, so we're going to see a little bit that why this is a problem, but at first glance, it's great because we can be 100% sure that the DOM will be available at that point. The downside is that it could take our web page a really long time to download huge image files, huge video files, huge flash, or whatever the case might be, files that are associated with that web page. And so we're going to be waiting a long time for that window.onload event to fire off. Meanwhile, the user could be clicking around our web page, but we haven't had a chance to attach our JavaScript to that web page yet. You see the dilemma? Again, let's table this, come back to it a little bit later in this video. For now, we don't have any images. I'm not really all that worried about it. This will work for the time being, all right? And what will work? Well, here's what I'm gonna do. So go window.onload equals, and then I'll create an anonymous function, and that anonymous function will just contain these 2 lines of code in it. All right, so let's save this. Let's refresh that. And now when we click the Click Me button, we get running the example alert box to show up because our button was successfully attached to this function. All right, now I took 2 steps just to demonstrate what the document.getElementById does. Most of the time when you see this, it's going to look more like this. And then immediately you'll call the onClick and set that equal to run the example. All right, so that's a little bit more realistic. Let me refresh this. And it still works. Great. Okay. So just to be clear here, I'm attaching an anonymous function to the onload event of the window. So once the web page completely finishes, this function will fire off, which in turn will find the Click Me button and attach the Run the Example to the click event of that button. Great. So basically, once you have a programmatic reference to read values from elements in the DOM, to change values of elements in the DOM, to add new elements to the DOM, to attach JavaScript code like we did to elements that are fired by interacting with elements in the DOM, like clicking a button or a link or so on. But it all starts with getting a reference to an individual element in the DOM or one or more elements in the DOM. And once you have a reference, you can change its content, you can change its style, its visibility, change its behavior, manipulate it in a number of different ways. So now that we understand how to get a reference to a given element in the DOM, let's look at some of the ways, just a few of the ways that we can navigate through the DOM, change properties of a given DOM element, and so on. So at this point, what I want to do is I'm going to actually save this for later because we're going to come back to this simple version. And what I'm going to do is create a new version of it that we'll use for the time being, okay? And what we'll start with is let's just get a reference to one of the elements inside of our HTML page. So var my element equals document.getElementById, and let's grab that second paragraph, the element with the paragraph element with the ID of second. Remember that one? We've kind of picked on it a couple of times here. And the first thing we can do is just find out what kind of a HTML element it is. So var my node name equals my element dot node name, and then let's just do alert my node name. And I'm taking some extra steps here. I could have compacted this greatly, but I want to make everything clear as to what we're doing and why we're doing it. So at this point we can see that second paragraph is of type P. It's a paragraph element, in other words. Okay, great. Now let's do this. Let's make sure that my element is not null, it's not empty.
And if it's not empty, then let's do a different alert. This time, let's go my element and grab its inner HTML. And I have a caution about this in just a moment here. Let's comment this one out. And let's refresh this. And so what we can do is grab the HTML that's inside of our paragraph. So that's why we're seeing HTML tags like strong surrounding the text itself, second paragraph, okay? And the good folks at Microsoft wanted me to caution you about using Innerhtml. So Innerhtml has years of vendor support, browser support. The fact is that until the HTML5 specification came out, it was never a standard. It was never something that you can rely on all browsers supporting. So again, while almost every browser has supported Innerhtml, you might want to use it with caution. This is another area where jQuery will smooth over the browser differences and give us properties that we can use across virtually every popular browser. So probably in the real world going forward, I would never use Innerhtml. I'd probably rely on jQuery for some of these sorts of things to retrieve certain values like the text that's inside of a given element and so on, all right? So just use Innerhtml with caution, but hey, since we're on the topic, let's go ahead and use Innerhtml in another capacity. Here, I'm just gonna start over again from scratch and do Innerhtml equals see how I set the text here. And so what we're gonna do, here we grabbed the value of Innerhtml and sent it to screen. But now, let's comment all this out. Let's use it to set content on screen. And you're going to need to watch closely what happens. Refresh this. Now notice it says second paragraph, but I'm going to click the button and it changes to see how I set the text here. And you're going to need to watch closely what happens here. So let's refresh this. Now notice it says second paragraph, but I'm going to click the button and it changes to see how I set the text here. So that's what I meant by behavior and by reacting to some DOM events and then using that to trigger the change of the appearance of other DOM elements, okay? Neat. But again, we never want to use Innerhtml if we can avoid it, and we'd probably prefer to use jQuery instead. All right, so what else can you do? Well, you can get all of the same elements on a given page. So here we go, a list of paragraphs. And I'm going to do document.getElements by tag name. Give me all of the paragraph elements. And now that I have this array of paragraph elements, what can I do with it? Well, the first thing I'm going to do is just see how many there are. So list of paragraphs dot length. Great. So this will show me how many I have. And I have 3 paragraph elements. Awesome. Let's comment that out. And let's see, how do we get at just one of the paragraph elements? Let's do this. Var second paragraph. So I'm going to yank off one of the paragraph elements and put it in its own variable, and then I can work with it individually. All right? Paragraphs. And the way I'm going to do that, since I'm working with an array, is I'm just going to work with the second paragraph. This is 0 base since it's an array, so I'm going to use the index of 1 to get to that second element in the array. And then I'll do alerts, second paragraph, and I just can't help myself. I'm going to grab the Innerhtml again. I know. Kind of a rebel that way, aren't I? And there we go. We're back to the Innerhtml of our second paragraph. Cool. All right, so we're able to get elements by ID. We're able to get elements by tag name. Can we get elements by class? Yes, sort of. There is a new method called get elements by class name as defined in the HTML5 specification. However,
It's not supported in all older web browsers. And so you have a couple of choices. You could go off and create your own version of this that just basically looks through every element in the DOM and looks at its class and add it to an array. You can do that on your own, or just use jQuery, because that's what it does by default. jQuery uses CSS selectors to return an array, or a collection, I guess, of individual DOM elements that all have the same class name. That's what it's best at. So I would probably just say, don't do this, use jQuery instead. And I'll say that quite a bit, as a matter of fact. But at any rate, let's grab, well, actually, let's just comment all this out. And let's start over one more time. My element equals document.get element by ID. And we'll pick on that second element again. Now, here's where we can start navigating through the document object model. Like, how do I find out what the parent of this element is? We can get to it through the parent node property, and then we can just keep using the dot notation to get to a property of an object, which is a property of another object. Node name, and save that. And if we look here, what we expect to see, what is the parent of our paragraph? The parent is this div, as we can see through the notation, or the indentation levels. So let's see if we get that result, and we do. The paragraph is a div. Awesome. All right, and I'm not going to demonstrate all these. In fact, I'm just going to go ahead and kind of make some more multi-line comments here. But we can navigate through the DOM in a couple of different ways, like my element dot find all the children, so all child nodes, and this will give me an array of children that belong to this element, and I can access it through, a zero-based index as well. After I find out exactly how many children are associated with that given element, if I needed to. All right, so let's just leave it at this for now. I can also get down to just the first child, or I can get down to the last child, get a reference to it. I can get to looking at this element, what is my next sibling? So who's my parent? Div. What are the rest of their children? Well, in this case, there's more paragraphs, right? And I can get to the previous sibling, and so that's what I'm doing with these methods as well, or these properties. Okay. Now, we've seen up to this point how we can work with Innerhtml. We can actually modify just about any attribute of a given DOM element. So in this case, let's play around with the anchor tag. You'll remember the anchor tag on our webpage has a href set to bing.com and has an ID of my anchor. All right. So let's play with that a little bit. var anchor equals document.get element by ID, my anchor. And now let's find out the destination of that anchor tag by checking its href property. And then let's go ahead and just alert that. Anchor destination. Refresh, and we can see that we were able to retrieve the attribute of the href. Now let's go a step further with this. Comment these out. And let's actually set the anchor. Now let's try just doing, starting with something simple like href equals http://www.learnvisualstudio.net, my website. Let's save that, and then let's refresh this.
And so you can see I'm going to hover my mouse cursor over the anchor tag, and you notice in the lower left-hand corner it says the current href is bing.com. I'm going to click me, and now I hover my mouse cursor over it, and it changed the href to learnvisualstudio.net. Awesome. Now, honestly, in some older web browsers, it will not allow you to access either get or set a given property using the simplified syntax. In some older browsers, you have to do something like this. Anchor.set attribute, href, and then http://learnvisualstudio.net, or I'd have to do anchor.get attribute, href, to do something like I did earlier. However, in newer versions of the browser, you don't have to worry about that. And again, if you're using jQuery, you probably don't even need to worry about any of this because they have their own means of setting and retrieving attributes. Okay. So at any rate, I think that pretty much ends the examples that I wanted to talk about for now, at least in this particular example. I'm going to comment this whole thing out because I have a bigger topic I want to talk about. And so now we do not have a live run the example. They're both commented out. All right. But we've talked about get element by ID, and we've seen a couple of other ways like get elements by tag name and get elements by class name, and other ways to navigate through the DOM using going parent node, child nodes, first child, last child, next sibling, and so on. And I just want to make it clear, once you start using jQuery, you probably never do it this way again, because jQuery provides a shorthand experience and a more powerful set of selectors for based on cascading style sheets. It makes it easier to navigate through your DOM. More about that in the next lesson. Don't want to bog down too much here. One other quick note, you can change styles in JavaScript. So I can add individual styles like change the font or the text color, the background, foreground, things of that nature directly from JavaScript. I didn't demonstrate that because I don't believe you should do that. Just because you can do something doesn't mean you should do it. What I think the more proper way to do it is define a CSS style, and then again, using jQuery, you can attach and detach styles from DOM elements, and I think we're going to demonstrate that later in this series as well. So I just wanted to address that, since you might be thinking, ooh, I could style something and, you know, put a yellow color behind it as somebody clicks something. Don't do that. Don't just change one attribute like the background color. Change the class, all right? All right, so moving on, and before I wrap up, I want to talk about that wrinkle that we discovered earlier in this video when we needed to add some JavaScript after the DOM has been constructed. Our first real opportunity to do that was in our window.onload up here. And recall that window.onload fires off after all the images, video, flash animations, and so on have been loaded. All right, that's the problem. Because if it takes our web page a long time to download all those large images and video files and so on, then the user may see parts of the web page, maybe see all of the web page, waiting for images to slowly make their way into the browser and even be able to interact with the web page, but we haven't had a chance to wire up our JavaScript yet. And so our JavaScript is late to the party, so to speak. Somebody's already clicking around and doing stuff, and we haven't had a chance to really give the user the full experience because we wired it up too late in the process. So just to be clear, I want to oversimplify and create a diagram here of the problem. In reality, some of these things are happening in parallel, but don't miss the real point. The process begins with parsing the HTML into DOM. At some point, it's going to begin loading external resources like images. At some point, the page is partially rendered to screen. As the parsing of the HTML into DOM happens, JavaScript could be executing if we have any JavaScript in the page that references DOM elements, but it's not until much, much later in the process, until everything is finished, when the window.onload event is firing. And so it's this gap right here in the middle that's worrisome, because again, the user could be interacting with our web page
but we haven't had an opportunity yet to wire up the window.onload event, to wire up the other controls like we've done here, like the command on click, the button on click event, and so on. And so that's really where the issue is at. So as you might expect, newer web browsers support new standards. They have better support for this whole situation. There are new events available in newer browsers that allow you to tap into the moment when the DOM is ready. However, in older browsers, it seems like every browser vendor had a slightly different solution, so there's no unified way to really handle this. Now, there is an easy remedy for this situation, but I don't think we're going to like it very much based on what we learned in the previous lesson. As we saw earlier, we could mix our JavaScript code in with our HTML so that we can load bits of JavaScript right as it is encountered inside of the HTML page through the DOM parsing process. So you'll recall from very early on, we can execute JavaScript inside of the body of our HTML page. The code executes as it's being encountered, and it will execute so long as it's not interacting with a DOM object that has been already created and added to the tree. As long as that's happened, then it's available for manipulation. All right, so let me just illustrate this because I may have butchered that explanation a tiny bit. So what we're going to do is uncomment out or run the example. Right, the first thing I'm going to do is comment out this, and I also think this isn't going to work. I'm going to get rid of all these, otherwise I'm going to be shooting myself in the foot here. And that should stay. All right. So, okay, great. So let's go ahead and save that, and then I want to keep this part because I'm going to use that here in my C9JS_13.html file. I'm going to start here with creating a new script. Type equals text JavaScript, and start by just putting that there. Let's save it. Now, do you think this will work? Well, no, it doesn't work. And the reason it doesn't work is because this JavaScript code gets executed way before the instance of the click me input type equals submit is added to the DOM. All right, so let's just cut to the chase here and move this directly after we would expect it to be created in the DOM. So let's go ahead and save this, and now let's refresh this, and it works. All right, just to be sure there's nothing up my sleeve, let me cut this and put it right before that line of code, right before the click me button is created in the DOM, and nothing happens. All right, so yeah, so I could get this example to work and to not have to worry about this whole time gap issue like we saw on the slide a moment ago. But do you see the trade-off that I had to make? I had to mix JavaScript and HTML in the same document, and we spent a long time in the previous video explaining why we wanted to avoid that. So fortunately, this is one of those problems that jQuery will just solve for us, and we can learn that in the next video. But you know, the reason why this kind of worked when we were using window on load was our example web page was small. We had no external references to images, so I suspected I was pretty safe that the gap between the time when the DOM was finished and when the rendering of the page was finished and the window on load fired was minuscule. So in the real world scenario, however, this is something we want to be aware of because it has the potential to break our applications for certain users, especially those with dial-up access to the internet. Okay, so let's go ahead and recap and then finish this up. First of all, we talked about the document object model at length. We said it's the browser's internal mapping of elements on the web page to objects in the computer's memory, available for the express purpose of allowing JavaScript code to read and manipulate those elements. And we saw that you can
use many built-in DOM functions to access one or more elements on the web page. You can also navigate through the relationships of the elements like parent, child, sibling, and so on. We looked at how to set properties and get retrieve values from the properties of each of the DOM elements. Several times during this lesson I said, hey, that's nice, but you'll never really want to do it that way because it's easier to do it in jQuery. So for example, selecting an element of the DOM is easier in jQuery than using the built-in DOM API, at least in my opinion. The same is true with events. The same is true with styling your events at runtime. The same is true with how we'll solve this dilemma that we were just finished talking about, where we want to write code as soon as the DOM is constructed, but we don't want to wait for all the images and everything else to load on the page. Waiting for the window.onload event could result in our JavaScript arriving late to the party, as I said. So, at any rate, we learned quite a bit. We've gotten to the point where we're beginning to... Okay, guys, so I'll just share this video with you. We are not going to follow all those videos. The reason behind this is because वो जो वीडियो जो है वो थोड़े पुराने हैं, सो उसमें से सर्टन जो काम की चीज़ है वो आज हम लोगों ने एक वीडियो में देखा. आई एम शेयरिंग दैट वीडियो लिंक इन चैट बॉक्स. तो जो एक एग्जाम्पल वो वीडियो में बताया, आई वॉन्ट यू टू ट्राई द एग्जैक्ट सेम कोड वंस वी डन एक्सपेरिमेंटिंग दैट कोड. उसके बाद अगर मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा वो आपको बेटर वे में समझेगा. सो आई वॉन्ट यू ऑल वो सेम वीडियो रेफर करो और उसके अंदर जो कोडिंग बताया हुआ है वो एक बार एग्जीक्यूट करो जैसे वो पार्शियली बताया था. एग्जैक्टली आप सेम अपने साइड पे अपने एंड पे कोड करके वो सेम ट्राई करो. एंड उसमें फिर बाकी के जो सर्टन चीज़ें हैं उसमें अपडेशंस हुए. ये काफ़ी पुराना वीडियो है. तो अभी जावास्क्रिप्ट में जो एडवांसमेंट हुए हैं ना वो धीरे धीरे हम लोग समझते हैं. तो आपको ये बेसिक अगर समझ में आएगा तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कुछ लेक्चर्स डिस्कस किए जावास्क्रिप्ट के ऊपर. लेकिन यूनिट 4 एंड यूनिट 3 का जो एंड का पार्ट है वो अगर आपको क्लियरली समझने के लिए सर्टन ये एक्सरसाइजेज ज़रूरी है. हम लोग कॉलेज में प्रैक्टिकली नहीं मिल रहे हैं कि हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे फेस टू फेस मिल के कंप्यूटर लैब में जाके हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए जहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूँ, आप देखो. सो मेरे पास ये एक वे है फ़िलहाल के लिए. सो बेटर कि आप जो भी अभी बताया हुआ है वो ट्राई करो और एक बार आपका वो हो जाएगा वो सेम कोड का स्क्रीनशॉट आपको चैट बॉक्स में डालना है. ठीक है. सो अभी हम लोगों का ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होना है. ये सेम जो लिंक है वो आप अपने साइड पे ऑन रखो. मैं आपको 20 मिनट्स का टाइम देता हूँ. ठीक है. सो 10 को विल कंटिन्यू विद आर नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. 9:55 को मैं ये लेक्चर एंड कर दूंगा. बट टिल 10 तक आपके पास टाइम है. जो भी वीडियो में कोड बताया हुआ है वो आप एक बार खुद से उसको एग्जीक्यूट करेंगे. एक बार ध्यान से वो कोड देख लो, एग्जीक्यूट करो. वो सेम जो आपका एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे आपको चैट बॉक्स में डालना है. ये लेक्चर एंड होने के बाद में इसके बाद वाला जो लेक्चर स्टार्ट होगा उसके चैट बॉक्स में डालना है. सो डू इट क्विकली. ओके गाइस, सो मोर ट्राइड इट वेरी वेल. और जो लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है या जिनका इन बिटवीन है वो लोग आगे बाद में ट्राई करो. सो बहुत सारे लोगों ने वो सेम वीडियो ट्राई किया है. मैंने लिंक जो है वो दोनों लेक्चर्स के चैट बॉक्स में डाला हुआ है. तो अगर आप ये लेक्चर एंड होने के बाद में अगर आप वापस ट्राई कर रहे हो सो जस्ट मेक श्योर कि आप वापस चैट में आके कोई भी एक लेक्चर के चैट में आके यू कैन जस्ट वेरीफाइड फ्रॉम दैट. सो ये वाला जो हम लोगों का वीडियो जो आज हम लोगों ने देखा था वो हो गया. अब चैप्टर 5 जो हम जो एक्चुअल जो जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट हम लोगों को करना था वो मैं बता देता हूँ. और अपने सिलेबस वाइज कहाँ तक हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. एज यू कैन सी जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स ये सब हो गया, स्टेटमेंट्स हम लोगों के लूप्स जो है वो सब हो गए. अब कोर जावा के हम लोग के जो सर्टन कंसेप्ट है, डेट फंक्शन, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये सब देखेंगे. और ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो सर्टन चीज़ है वो तो लाइक यूनिट 3 जो है हम लोगों का ये चैप्टर एंड के साथ में हम लोगों का यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. यूनिट 4 का मैं आपको दूसरा डॉक्यूमेंट दे दूंगा एज सुन एज वी स्टार्ट विद यूनिट 4. सो आपको ये जो
टॉपिक 5 तक के जो भी चीज़ें दिए हुए हैं ये पूरे आपको रेफ़र करना है। ये आपका पूरा अब तक का 3 यूनिट्स का पूरा कंबाइंड डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो सारे PDF फाइल्स आपके पास है। इसके बाद के जो फाइल्स हैं वो दूसरे रहेंगे, ये सेम बुक में से नहीं रहेंगे, बिकॉज यूनिट 4 से आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा चेंज होगा अभी। ठीक है, सबको पता चला? तो फर्स्ट 3 यूनिट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी है, वो आपको एज इट इज़ पूरे पढ़ने हैं एग्ज़ाम के लिए, प्लस अलग से जो मैंने बुक में लिखाया है वो। अगर आपको नहीं पता है, इफ़ यू हैव ज्वाइन लेट या इफ़ यू हैव मिस्ड एनी लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग आर ऑलरेडी अवेलेबल on Microsoft Team, as well as I have updated all the lecture videos on YouTube as well, so you can just watch it from there also. So आपके कंप्लीट 3 यूनिट्स जो है मैं वहाँ पे अपडेट कर दूँगा, आप वहाँ से वो वेरीफाई कर लो। सो लास्ट के अपने 2-3 लेक्चर्स वहाँ पे अपडेट करने बाकी है, सारे बाकी के जो भी लेक्चर्स हुए वो सारे मैंने डाले। सो इफ़ यू वांट टू रिवाइज इट, गो रिवाइज इट। प्रैक्टिकल्स जो हुए हम लोगों के बैच में, वो प्रैक्टिकल्स भी मैंने वहाँ पे अपडेट किए और थियोरी लेक्चर्स भी अपडेट किए। सो आई होप विथ रिस्पेक्ट टू ये लेक्चर्स आपको कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। मैंने अलग से सर्टन चीज़ें जो बुक में लिखाया है जो PDF में नहीं है, सो आफ्टरवर्ड्स यू कैन नॉट क्वेश्चन कि PDF में ये वाला टॉपिक या ये वाला पॉइंट नहीं था जो एग्ज़ाम में आया। सो इफ़ योर नोट्स आर नॉट अपडेटेड, आई एम नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एवरीथिंग इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड फॉर नाउ। तो मैं ऑन रिकॉर्ड आप सबसे ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ। सो मेक श्योर you update your notebook as per the syllabus, as per the lectures which we have conducted from first lecture till now. So internal के लिए भी अगर मैं आपको 2 यूनिट्स अगर सिलेबस में अगर बोलता हूँ, आपका 2 यूनिट्स अगर फर्स्ट यूनिट्स अगर आपका सिलेबस है, इट मीन्स द PDF जो आपके साथ शेयर हुआ है वो, प्लस अदर थिंग्स जो मैंने आपको नोटबुक में लिखाया हुआ है वो, जो लेक्चर्स में हुआ है ऑन रिकॉर्ड, जो लेक्चर में हुआ है जिसका हर एक का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। सो अगर आपको नहीं पता है लेक्चर में क्या हुआ था, आपको नहीं याद है लेक्चर में क्या हुआ था, जस्ट गो एंड रिवाइज दोज लेक्चर वंस। ओके, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का आपको बेसिक दिया हुआ है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था ये वाला डॉक्यूमेंट, बट आज का जो वीडियो हम लोगों ने एक बार प्रैक्टिस किया है, उसके बाद अभी आप जब ये डॉक्यूमेंट पे आएंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। सो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिया है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एनकैप्सुलेशन, आप डेटा को बहुत सिक्योर रख सकते हैं। कैप्सूल, जैसे कैप्सूल रहता है उसके अंदर क्या मेडिसिन है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। एग्जैक्टली सिमिलर वे व्हेन आई ट्राई टू हाइड सम डेटा, सो इसको डेटा हाइडिंग भी बोल सकते हैं। एनकैप्सुलेशन मीन्स डेटा हाइडिंग, वी आर प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी लेयर ओवर आर एग्जिस्टिंग कोड so that one cannot easily get the logic or an algorithm which we have written for the same code. So that's why for a security purpose we apply encapsulation. Aggregation as we all know क्या होता है, then inheritance है and polymorphism है। Inheritance as we know like आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके पेरेंट्स ने इनहेरिट किया है, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स का प्रॉपर्टी जो है वो आप इनहेरिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास अगर घर था तो वो आपके पेरेंट्स ने इनहेरिट किया। आपके पेरेंट्स के पास अब कार है तो आप ग्रैंड पेरेंट्स का जो घर है वो, और आपके पेरेंट्स के पास जो कार है, ये दोनों चीज़ें आप इनहेरिट करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म, आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर कार यूज़ करते हैं तो वो कार लेके मंदिर जाते हैं, आपके पेरेंट्स कार यूज़ करते तो वो लेके वो लोग ऑफिस में जाएंगे सपोज, और आप अगर वो सेम कार लेके कहीं पार्टी करने जा रहे हो। सो वन सेम प्रॉपर्टी इज बेसिकली यूज्ड बाय 3 डिफरेंट क्लासेस इन 3 डिफरेंट मैनर्स, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सेम प्रॉपर्टी इज गेटिंग यूज्ड इन डिफरेंट मैनर्स, so that is what we mean by polymorphism. Poly means many, so the same properties or a same property or a method works in a different ways. That is what we mean by polymorphism. Remember the example of car. ग्रैंड पेरेंट्स मंदिर लेके जा रहे हैं, पेरेंट उसको ऑफिस लेके जा रहे हैं, और हम लोग पार्टी करने लेके जा रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म। देन नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे एज यू कैन सी क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एनी ऑफ द 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रहेंगे,
तो यहाँ पे वो आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने समझाया भी था, तो वापस मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ। सर्टन हम लोग काम के टॉपिक पे जाते हैं। सो यहाँ पे आपके पास यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं, वी ऑल वेरी वेल नो नाउ। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने वो देखा भी है। सो आई थिंक आप सबको क्लियर है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला पार्ट, क्लियर है ना सबको? एनीवन एनी डाउट? से यस और नो? एनीवन एनी डाउट with respect to object creation? Hello guys, अभी नो सर। टॉपिक, हाँ अभी जो टॉपिक ओपन है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हाँ Yes, sir. ओके। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हम लोग के पास हम लोग सर्टन ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं वो दिया है। एरे क्या होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी समझा है। एरे मीन्स कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो एक सिंगल, सपोज अगर मुझे पर्ल या जावा ऐसा ही एक कोई सिंगल वर्ड या एक सिंगल डेटा अगर स्टोर करना रहता था, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता था। बट ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, अब उसके मल्टीपल सब्जेक्ट्स के नाम अगर मुझे स्टोर करना है तो वो टाइम पे एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा। अगर 10 सब्जेक्ट्स है तो 10 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, 20 सब्जेक्ट्स है तो 20 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग और वर्किंग ऑन 10-20 डिफरेंट वेरिएबल्स, आई कैन सिंपली क्रिएट वन एरे जहाँ पे मैं 20 अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम सेव कर सकता हूँ। सो एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, दैट्स व्हाट वी मीन बाय एरे. So you can just note it down definition somewhere. Array is collection of similar type of a data. Collection of similar type of data. That is what we mean by array. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे C++, Perl, Java, these are the different values of string type. So देखो सबका data type same है, सारे string type में। C++ डबल कोट्स में लिखा है मतलब that's a string value. पर्ल डबल कोट्स में लिखा है दैट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। जावा डबल कोट्स में लिखा है दैट टू इज अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ अ वैल्यू। तो मल्टीपल स्ट्रिंग टाइप के डेटा या वैल्यूज को मैंने एक एरे के अंदर सेव किया है। एंड जावास्क्रिप्ट आपको ऐसे रेडी फंक्शनलिटी देता है, तो आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एरे वाला जो फंक्शनलिटी है, जो क्लास है, मतलब एरे वाला जो प्रोग्राम लिखा है, मैं डायरेक्टली उसको इनहेरिट कर रहा हूँ, मैं उसको मतलब मैं उसको रीयूज़ कर रहा हूँ। तो उसको रीयूज़ करने के लिए मैंने न्यू एरे, सो ये न्यू कीवर्ड से एरे वाला जो क्लास, मतलब एरे वाला जो प्रोग्राम है, मैं डायरेक्टली उसको कॉल कर रहा हूँ, उसके फंक्शनलिटीज़ मेरे प्रोग्राम में कॉल हो जाएंगे। एंड इक्वल टू मैंने यहाँ पे बुक्स नाम का उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सो वी हैव अ एरे, वी हैव अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम जो जावास्क्रिप्ट के अंदर प्री डिफाइंड है, और वो प्रोग्राम का नाम क्या है? एरे। दैट इज द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम। सो एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम है। ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड प्रोग्रामिंग, प्री डिफाइंड टेक्निक्स जावास्क्रिप्ट में और बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिलेंगे। सो जो मोस्ट ऑफ कॉमन फंक्शनलिटीज़ होते हैं, जो हम लोग बार बार बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन इन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस, वो सारे रेडी प्रोग्राम्स जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ वी हैव एरे वाला एक रेडी फंक्शनलिटी। तो अगर वो फंक्शनलिटी को अभी अगर मुझे रीयूज़ करना है इन माय एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो अभी हम लोग लिखेंगे, तो उसके लिए मुझे ये जो प्रोग्राम, एरे वाला जो प्रोग्राम ऑलरेडी डेवलप्ड है जावास्क्रिप्ट में, उसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, तब उसके फंक्शनलिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ कॉल होंगे, बराबर है। तो उसके लिए मुझे ये जो प्रोग्राम है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलते हैं उसको। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होगा? VAR क्रिएट अ वेरिएबल विद द नेम, एनी नेम वी कैन गिव हियर। हम लोगों ने यहाँ पे बुक्स नाम दिया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड देना है, दैट इज इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट को। इनिशियलाइजेशन मेमोरी रिजर्व हो जाएगा अब। तो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो वो एग्जीक्यूशन के लिए जो मेमोरी, जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा, और ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के बाद में जो टेम्पररी आउटपुट सेव होगा वेब पेज पे डिस्प्ले होने के पहले, वो सब कुछ इनिशियलाइजेशन जो है ना, मेमोरी इनिशियलाइजेशन हैपेंस विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू कीवर्ड। न्यू इज अ कीवर्ड। सो मेमोरी इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद मेमोरी इनिशियलाइज करने के बाद में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। सो इन आर केस ऑब्जेक्ट नेम इज बुक्स, और वो क्या कर रहा है? एरे नाम का जो क्लास है, इसके प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। तो अभी एरे के जो भी प्रॉपर्टीज़ है, इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़, जो आप आगे भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका प्रोग्राम कोई एडवांस लेवल का है, या सब कुछ बेसिक प्रोग्राम भी है। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन ईजिली यूटिलाइज द प्री डिफाइंड टेक्निक्स विच आर ऑलरेडी स्टोर्ड
in JavaScript's library. Same way we have a class with the name date. तो वो डेट वाला जो क्लास है उसके भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज या फंक्शनलिटीज अगर मुझे रीयूज करना है विदाउट कोडिंग ऑन माय ओन, तो आपको अगर खुद से मेहनत नहीं करना है, आपको खुद से अपना कोडिंग नहीं करना है, बिकॉज आप अगर खुद से ज़्यादा कोड लिखेंगे तो एरर आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे. सो मिनिमम कोडिंग हम लोग अपना खुद का लॉजिक लिखेंगे, वो भी तब लिखेंगे जब जावास्क्रिप्ट ने वो रेडी फंक्शनलिटीज हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया है, तो उतना ही हम लोग अपना खुद का लॉजिक लगाएंगे. अगर जो चीज़ जावास्क्रिप्ट आपको रेडीली प्रोवाइड कर रहा है ना, उसको हम लोग डायरेक्टली रीयूज करेंगे फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट. तो अगर डेट वाले जो भी फंक्शनलिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ अगर मुझे रीयूज करना है, तो डेट वाला जो मेरा क्लास है या डेट वाला मेरा जो प्रोग्राम है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना पड़ेगा. न्यू कीवर्ड से क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन हो गया, मतलब उसके लिए मेमोरी रिजर्व हो गया जहाँ पे वो एग्जीक्यूट करेगा खुद को, या उसके प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, वो अपना रिजल्ट जनरेट करेंगे, और जो न्यू कीवर्ड के थ्रू आपने मेमोरी इनिशियलाइज किया हुआ है वही मेमोरी में उसका रिजल्ट स्टोर होगा टेम्पररी, और वो रिजल्ट को उठा के हम लोग डे नाम का जो ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल यू कैन से उसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे, और देन ये डे नाम का जो वेरिएबल है उसको मैं वेब पेज पे प्रिंट करूंगा, तो आउटपुट मुझे वहाँ पे वेब पेज पे दिखाई देगा जो हम लोग का HTML का वेब पेज होगा. सो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, अब यहाँ पे क्या बोला है, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन दैट क्रिएट्स एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट. सो वी हैव अ कंस्ट्रक्टर, समथिंग व्हाट वी कॉल JavaScript provides special constructor function like object name से to build an object. सो मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली कोई एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकता हूँ. ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, वो प्रोग्राम जो रेडी प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट का अवेलेबल है या आपने लिखा हुआ कोई एक प्रोग्राम जो अवेलेबल है, वो प्रोग्राम के मैं रेडी फंक्शनलिटीज यूटिलाइज कर सकता हूँ. दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस. द रिटर्न वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इज असाइन टू अ वेरिएबल. मतलब ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देखो ना, ये फर्स्ट लाइन जो है वेरिएबल एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो हम लोगों ने एम्प्लॉय में स्टोर किया हुआ है. देन यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, मैं ये रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज वो वीडियो देखने के बाद में आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिला होगा. नहीं मिला है तो मैं यहाँ पे जब ये चीज़ें रिवाइज कराऊंगा तो आपको और बेटर एक बार तो प्रॉपर समझ में आएगा. तो सिंपल सा प्रोग्राम है हम लोगों के पास, HTML हेड ये सब तो ठीक है. स्क्रिप्ट टैग हम लोगों ने चालू किया, देखो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बुक नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने. देन उसके रेडी फंक्शनलिटीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बुक डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट सेव किया, बुक डॉट ऑथर इक्वल टू ऑथर का नाम सेव किया, स्क्रिप्ट टैग क्लोज. देन बॉडी के अंदर मैंने और एक नया जावास्क्रिप्ट टैग ओपन किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कोई एक स्टेटमेंट अगर प्रिंट करना है तो ऑफकोर्स हम लोग डॉक्यूमेंट वाला जो प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी है उसका राइट नाम का फंक्शन कॉल किया, और उसके थ्रू हम लोग वेब पेज के ऊपर कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं. तो हम लोग ने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, बुक नेम इज प्लस जो है वो आपका कॉन्केटिनेट ऑपरेटर है, तो वो उससे क्या होगा, रेडीमेड इनबिल्ट कोई फंक्शन कोई वैल्यूज जो है, जैसे यहाँ पे बुक डॉट सब्जेक्ट दिस इज द वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में देखो ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट होगा, बुक नेम इज एंड प्लस साइन के बाद बुक डॉट सब्जेक्ट, तो ये जो वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है पर्ल है वो प्रिंट होगा. बराबर है. BR टैग हम लोग को पता है लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है, तो इसके बाद जो भी कुछ आएगा वो नए लाइन में आएगा. सेम वे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सेम लाइन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, आउटपुट आ गया. देन नेक्स्ट प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम में वापस हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग सिंपली हम लोगों ने क्या किया, उसको एक फंक्शन में यूज़ किया. तो फंक्शन में यूज़ करने का बेनिफिट क्या हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे खाली ये फंक्शन को कॉल करना है और उसके अंदर के 2 स्टेटमेंट ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएंगे. सो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन का नाम हम लोगों ने दिया है बुक, और उसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए हम लोगों ने, टाइटल एंड ऑथर. तो टाइटल वाला जो है वो क्या आएगा, दिस डॉट टाइटल के अंदर आएगा, उसका वैल्यू ऑथर जो है वो दिस डॉट ऑथर के अंदर आएगा. दिस कीवर्ड डायरेक्टली पॉइंट्स टुवर्ड्स द करंटली ऑन गोइंग जो आपका फंक्शन है उसको पॉइंट करेगा. दिस जैसे हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना दिस, तो हम लोग को एक स्पेसिफिक करंटली एग्जीक्यूटिंग या करंटली कंपाइलिंग जो प्रोग्राम या फंक्शन रहता है उसको हम लोग पॉइंट करते हैं. तो एक्जैक्टली सेम वे जब आप टाइटल एंड ऑथर का डिटेल देंगे तो करंटली यहाँ पे जो फंक्शन है जिसमें दिस पॉइंटर हम लोगों ने ऐड किया है वहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा. स्क्रिप्ट टैग क्लोज, बॉडी के अंदर हम लोगों ने वापस स्क्रिप्ट टैग चालू किया, न्यू बुक का हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, न्यू बुक का वेरिएबल हम लोगों ने क्या बनाया, माई बुक करके, VAR स्पेस माई बुक आएगा, यहाँ पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, VAR दैट इज वेरिएबल स्पेस माई बुक आएगा.
स्पेस देना है दोनों के बीच में, VAR और माई बुक, ये जो हाईलाइट किया है मैंने उतना वो स्पेस दे के लिखना है ये चीज़ है। और उसके आगे न्यू बुक, और आप देखो यहाँ पे आपने फंक्शन क्रिएट किया है, तो फंक्शन में आपने 2 पैरामीटर पास किए, मतलब आपने 2 वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, टाइटल एंड ऑथर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही हम लोगों ने न्यू बुक का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, उसके साथ में आपका जो बुक नाम का जो फंक्शन है और उसके जो 2 पैरामीटर्स है उसको यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने असाइन कर दिया। टाइटल में पर्ल दिया और यहाँ पे ऑथर में वो ऑथर का नाम ऐड कर दिया। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये तो 2 स्टेटमेंट सेम है, ये हो गया। उसके बाद डिफाइनिंग अ मेथड फॉर एन ऑब्जेक्ट, तो हम लोग मेथड कैसे बना सकते हैं। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने सेम चीज़ किया है, वापस यहाँ पे ऐड प्राइस नाम का हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन विद द नेम ऐड प्राइस, और उसके आगे हम लोगों ने फंक्शन लिखा है। देखो अगर आप फंक्शन बना रहे, जावास्क्रिप्ट में ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फंक्शन, मैं वहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखूंगा, स्पेस फंक्शन का जो भी नाम है आपका वो, और ब्रैकेट में अगर मुझे कोई एक पैरामीटर पास करना है सो वो पैरामीटर यहाँ पे दूंगा मैं। देन दिस डॉट प्राइस एंड जो भी अमाउंट, ये पैरामीटर वाला जो फंक्शन है, पैरामीटर मतलब ब्रैकेट्स में, फंक्शन के ब्रैकेट्स में आप जब कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। आई होप आपने सी में कहीं पे तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सुना रहेगा। सो जब हम लोगों का फंक्शन होता है, फंक्शन कोई भी एक फंक्शन, ये कैसे पता चलता है, एक फंक्शन नाम रहेगा ऐड प्राइस और उसके आगे ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। सो जब भी कोई एक वर्ड के आगे राउंड ब्रैकेट्स होते हैं ना, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। और वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं कोई एक वेरिएबल पास करता हूँ उसको हम लोग उसके पैरामीटर्स बोलते हैं, या आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हैं आप। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट वन एंड द सेम। सो यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट वाला जो एक वेरिएबल बनाया, या आप समझो कि वो वेरिएबल को मैंने फंक्शन के ब्रैकेट्स में पास किया है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। और वो आर्ग्यूमेंट अभी क्या होगा, आप जब कभी अमाउंट के अंदर कुछ वैल्यू पास करेंगे, वो अमाउंट में से वो वैल्यू किस में असाइन हो जाएगा, प्राइस नाम के वेरिएबल के अंदर। सेम दूसरा फंक्शन हम लोग का बुक वाला है, यहाँ पे तो ये सेम चीज़ है जो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे देखो ऐड प्राइस वाला फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा उसको हम लोग ऐड प्राइस नाम के वेरिएबल में कैच करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ किया है, ये फंक्शन ऐड प्राइस वाला फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा उसका रिजल्ट हम लोग ऐड प्राइस, दिस डॉट ऐड प्राइस नाम के वेरिएबल में कैच कर रहे हैं। सो द रिजल्ट ऑफ वन फंक्शन वी आर कैचिंग और वी आर स्टोरिंग इन अनदर वेरिएबल, यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया। बस बाद में हम लोगों ने बॉडी पार्ट में वापस एक स्क्रिप्ट टैग क्लोज क्रिएट किया, न्यू बुक वाला जो हम लोगों का क्लास है उसका हम लोगों ने वेरिएबल बना, उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया माई बुक नाम से। ऐड प्राइस, प्राइस यहाँ पे 100 पास किया, तो माई बुक देखो ऑब्जेक्ट डॉट उसका प्रॉपर्टी नेम, तो ऑब्जेक्ट डॉट हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन नेम लिखा है। हम लोग का फंक्शन नेम क्या है, यहाँ पे देखो ऐड प्राइस, दैट इज आवर फंक्शन नेम। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, माई बुक दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम। तो जब कभी आपको कोई एक प्रोग्राम जिसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको उसके अंदर के अगर फंक्शंस या उसके प्रॉपर्टीज अगर कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट वो फंक्शन या प्रॉपर्टी नेम लिखो, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड पैटर्न जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन काम करता है। खाली हाँ उनका सिंटेक्स थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे चेंज होता है, बाकी पैटर्न ये जो होता है ये सेम रहेगा। और उसके बाद में हम लोगों ने तीनों जो टाइटल, ऑथर एंड प्राइस है इसको प्रिंट कर दिया, नथिंग एल्स देन दिस। देन विथ कीवर्ड कैसे काम करता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी समझा। तो एक शॉर्ट हैंड है जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग विथ कीवर्ड यूज़ करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो अगर मुझे डायरेक्टली बोलना है कि ओके वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे विथ कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, विथ कीवर्ड इज़ यूज टू अ काइंड ऑफ शॉर्ट हैंड फॉर रेफरेंसिंग एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट मतलब आपने जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसके प्रॉपर्टीज़ को उसके प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली रेफर करने के लिए हम लोग विथ कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको एक स्क्रिप्ट टैग दिया हुआ है, हेड सेक्शन के अंदर बनाया हम लोगों ने, HTML के हेड सेक्शन में। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है ऐड प्राइस, आगे फंक्शन कीवर्ड ऐड किया, देन उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया दैट इज अमाउंट। देन बाद में उसके अंदर देखो हम लोगों ने क्या किया, विथ कीवर्ड यूज़ किया, विथ दिस दैट इज अ करेंटली पॉइंटिंग, जो हम लोगों का फंक्शन है उसके अंदर अमाउंट जब भी आप ऐड करेंगे तो उसको डायरेक्टली आप स्टोर करेंगे प्राइस नाम के वेरिएबल में। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली हम लोगों ने शॉर्ट हैंड यूज़ किया। अगर मैं शॉर्ट हैंड यूज़ नहीं करता था तो मुझे क्या करना पड़ता था,
जो ऑब्जेक्ट डॉट उसका जो फंक्शन नेम है वो यूज़ करना पड़ता था, तो वो मेरा काम यहाँ पे इजी हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन बनाया, दैट इज़ बुक वाला। तो बुक वाले में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये देखो, ये तीन चीज़ें तो सिंपल है, टाइटल, ऑथर, प्राइस हम लोगों ने फिलहाल के लिए 0 रखा है। क्यों? बिकॉज ऊपर वाले फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो फिर हम लोग यहाँ पे असाइन करेंगे। तो देखो, ऐड प्राइस हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया, और वो जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम लोगों ने दिस डॉट ऐड प्राइस में सेव किया। और उसके बाद हम लोग बॉडी टैग में स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे। देन सेम चीज़ यहाँ पे चलेगा, देखो जो प्रीवियस प्रोग्राम में देखा, न्यू बुक, देन उसके अंदर हम लोगों ने टाइटल एंड ऑथर का नाम पास किया। देन उसको हम लोगों ने माई बुक नाम का एक जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर सेव किया। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने उसका ऐड प्राइस वाला फंक्शन कॉल किया, उसमें पैरामीटर है आपका, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो पैरामीटर को वैल्यू असाइन कर दिया 100। सो याद रखो, बॉडी पार्ट में, हेड पार्ट में हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं और बॉडी पार्ट में हम लोग वो फंक्शन को कॉल करते हैं। ये पैटर्न चलता है, दिस इज द स्टैंडर्ड पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट। उसके बाद में यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो सर्टन दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो है वो चालू होता है। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स और जो भी कुछ है ना वो यहाँ से हम लोग का मेन टॉपिक चालू होता है। सो वो एक जो वीडियो मैंने बताया वो आई होप आप लोगों ने ध्यान से सुना रहेगा, वो सुना है। और आज का ये जो लेक्चर जो लास्ट टाइम के टॉपिक मैंने रिवाइज करा है वो इसके लिए, क्योंकि आगे के जो मैं टॉपिक बताऊंगा उस पर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसके लिए मैंने ये चैप्टर, ये टॉपिक वापस रिवाइज कराया है आज। सो बेटर कि आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जावास्क्रिप्ट का हम लोगों ने इनफ हम लोगों ने डिस्कशन किया है। सो एक बार ये 3rd यूनिट कंप्लीट होने के बाद 4th एंड 5th यूनिट काफ़ी फटाफट कंप्लीट होंगे। सो मेक श्योर कि आप फर्स्ट 3 यूनिट्स को ढंग से रिवाइज कर लो, बिकॉज उसके बाद के यूनिट्स जो है वो काफ़ी क्विकली रिवाइज होंगे, क्विकली कंप्लीट होंगे। सो थोड़ा आप रिविजन साथ में करते चलो। आज तक का जो भी हम लोगों का आज लेक्चर हुआ है ये सब कुछ मैं यूट्यूब का हम लोगों का जो लेक्चर सीरीज़ है उस पर अपडेट कर दूंगा। सो यू कैन जस्ट गो एंड रिवाइज इट फ्रॉम देयर। इंटरनल्स के टाइम पे आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर इसके लिए आप रेडी हो। और जब हम लोग प्रोग्रामिंग टाइप के कोई सब्जेक्ट्स पे अगर इंटरनल कंडक्ट करेंगे सो वहाँ पे आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऑफ कोर्स ऑनलाइन एग्जाम अगर होगा तो MCQ टाइप जो क्वेश्चन आएंगे उसमें डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको वहाँ पे थियरी पूछूंगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट का फुल फॉर्म, जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पस क्या है, ऐसे बच्चे जैसे सवाल नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे प्रोग्राम दिया है सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि मैं आपको HTML का छोटा सा कोड दूंगा और नीचे 4 आउटपुट दूंगा, यू सपोज टू सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट। सेम गोज विद जावास्क्रिप्ट एज वेल। एंड जावास्क्रिप्ट के अगर मैं मैथ फंक्शन अगर यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मेन एडवांटेज क्या रहेगा, अगर मैं डेट फंक्शन अगर यूज़ करता हूँ तो उससे हम लोग क्या आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप MCQs ईजीली क्लियर कर पाएंगे। अगर आपने प्रोग्रामिंग अब तक एक भी बार किया नहीं है, रोज़ मेरे लेक्चर में आप खाली लॉगिन करके अगर सोते हैं तो समझ लो कि MCQ क्लियर नहीं होना है। और सेकेंड थिंग, जो हम लोगों का जो सब्जेक्ट है, आप गूगल भी अगर MCQ करेंगे तो भी डोंट थिंक कि आपको आंसर मिलेगा। आपने अगर खुद से प्रैक्टिस किया है तो ही आपको आंसर मिलेगा। सो मेक श्योर आप अभी से रिविजन चालू करो। CSS जो अगर आएगा आपके इंटरनल सिलेबस में तो उसमें भी सेम पैटर्न चलेगा कि मैं आपको CSS का कोई कोड दूंगा एंड यू सपोज टू फाइंड द आउटपुट। तो अभी आप कोड को गूगल पे कॉपी पेस्ट करोगे, उसका रिजल्ट ढूंढोगे, तब तक में तो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो आपके पास एक ही रास्ता है, जो भी हम लोगों ने अब तक प्रोग्रामिंग किया हुआ है, जो भी हम लोगों ने लेक्चर्स अभी तक कंडक्ट किए हैं, आप उसको रिवाइज करो। और मोस्टली हम लोगों का इंटरनल सिलेबस जो होगा वो फर्स्ट 2 यूनिट्स रहेंगे। सो जावास्क्रिप्ट चलो आपको नहीं आएगा, लेकिन HTML CSS तो गारंटी आपके इंटरनल्स का सिलेबस है। सो अभी से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ इसके लिए। इंटरनल का सिलेबस फर्स्ट 2 यूनिट्स कन्फर्म आपको पढ़ना है, फर्स्ट 2 यूनिट्स। तो फर्स्ट 2 यूनिट्स में क्या क्या रहेगा आप यहाँ से सिलेबस में देख सकते हो। देखो फर्स्ट 2 यूनिट में आपका HTML CSS एंड स्टार्टिंग में इंटरनेट एंड www के ऊपर जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा वो है। सो इंटरनेट www आपको मैं एक बार बता देता हूँ, जो हम लोग का PDF है। सो PDF में अगर आप चैप्टर 1 अगर देखेंगे सो उसके अंदर आपको थियरी पार्ट मिलेंगे।
सो फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें आपको काफ़ी थियरी पार्ट मिलेंगे। सो उसके अंदर तो आप MCQs में यहाँ से देख सकते हैं चीज़ें, लेकिन जो सेकेंड यूनिट है उसके लिए आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे, और वो प्रोग्राम्स का आपको आउटपुट क्या है वो MCQ में दिया रहेगा, जो आपको करेक्ट आउटपुट फाइंड करना पड़ेगा। सो ई कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, दिस टाइप ऑफ MCQs विल बी देयर फॉर फर्स्ट यूनिट। लेकिन सेकेंड यूनिट में आपको देन डायरेक्टली प्रोग्राम्स ही आएंगे, ज़्यादातर सारे प्रोग्राम्स आएंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स रहेंगे, लॉजिक दिया रहेगा, एंड आपको वहाँ पे उसका करेक्ट आउटपुट फाइंड करना रहेगा। सो वैसे आपके MCQs रहेंगे। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर सच MCQs। ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम आप एकदम सरप्राइज हो जाओ एट द एंड। और ये जो PDF है उसके साथ में मैंने आपको बुक में सर्टन चीज़ें लिखाया हुआ है। सो मेक श्योर कि आप वो बुक अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो रिविजिट द सेम लेक्चर्स, अपना बुक कंप्लीट करो। और आपके अगर नोट्स इनकम्प्लीट है तो आपके कोई फ्रेंड्स जो रेगुलर लेक्चर बैठते हैं, जो डिक्टेट करता हूँ वो रेगुलरली नोट्स अपडेट करते हैं, उनके पास से ले लो, इट्स योर चॉइस। लेकिन आप अगर अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, आपको एक्चुअल में पता रहेगा आपने क्या चीज़ लिखा है और क्यों लिखा है, और हम लोगों ने लेक्चर में कैसे डिस्कस किया था, तो आपको एग्जाम्पल्स भी याद रहेंगे। ओके, सो आज मैं अभी कोई नया टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यूअस ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर आप समझ लो कि हम लोग का थर्ड यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। सो बेटर यू ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स नाउ। एक हम लोग एक डमी टेस्ट टाइप करेंगे, डेमो होगा, जहाँ पे आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो आपको MCQs कैसे मिलेंगे, आपको कैसे लॉगिन करना है, कितने टाइम में आप कैसे आंसर कर सकते हैं, एक डमी टेस्ट टाइप हम लोग रखेंगे। सो उससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा। ओके, नाउ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। आज मैं कुछ अभी नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ।